ये बताएं, आर यू फ्रॉम कर्नाटका? नो सर, आई एम फ्रॉम इंडिया, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, ओके। आप कर्नाटका के किसी बंदे को जानते हैं जो कि फर्स्ट हैंड नॉलेज रखता हो इसकी? यस सर, यस सर, एक्चुअली आई एम एन एडवोकेट एंड मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को कर्नाटक में। Okay, so give me the intensity, the real intensity of the issue at hand. Okay, not something that you heard, something that you actually know. Not something on your TV. I don't know what kind of TV channels you have, but ज्यादातर टीवी चैनल जो है ना वो एक पेंटेड व्यू देते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि इशू नहीं है, आई एम प्रीटी श्योर कि इशू जितना दिखाया जा रहा है उससे भी ज्यादा है। आई नो व्हाट इंडियन मुस्लिम्स आर गोइंग थ्रू, डोंट वरी, आई लीव नो डाउट। सो आई एम नॉट वन ऑफ दोस पैसिफिस्ट मुस्लिम्स हु एक्चुअली स्टार्ट्स टू से कि oh you know what, turn the other cheek. I'm not that guy, and that something has backfired in many occasions. I know where we have to show the the tolerance and where we can't. Okay, but the question is, what are the facts? See, I have actually come to terms with the fact कि जब भी कोई चीज टीवी पे सुनो ना, तो uh, उसको डिसमेंटल करने के लिए सबसे पहले कोई स्ट्रेटजी बनाओ। अदरवाइज मैं तो देयर इज नो वे। ये दिस इज द बिगेस्ट form of deception now. Media has lost its credibility for the last 50 odd years. जिस वजह से ये लोग आए थे मीडिया यस में। सर, सो वो मसला ये हुआ है कि मीडिया में अब जितने भी लोग आते हैं ना, वो जिस तरह पुलिस में जाते हैं ना इंडिया में, या जिस तरह पार्लियामेंट हाउस में जाते हैं, तो वही वाले लो मोरालिटी के लोग मीडिया में भी जाते हैं ना। मीडिया में कोई मोमिनीन तो नहीं जाते। तो यस सर, मीडिया की जो पावर है वो ऐसे करप्ट लोगों को मिली हुई है। जो पार्लियामेंट हाउस में इतने करप्ट लोग नहीं है, ट्रस्ट मी, उनके ऊपर बहुत चेक्स होते हैं। मीडिया पे तो कोई चेक ही नहीं है। यस हवा सर, जो भी बोल देंगे बस, इनको कोई कोई क्वालिटी इंडेक्स है ही नहीं ना। इज नो वे टू यस सर, फाइंड सेइंग एनीथिंग। और वैसे भी मीडिया इंडस्ट्री की जो जर्नलिज्म है ना, जर्नलिज्म, ये यस सर, साइकोलॉजी सबसे वीक ऑक्यूपेशन टू हैव है, जर्नलिज्म। तो ये किसको साइकोलॉजी का पता है ना, उसको पता होना चाहिए कि ये आप हर एक की खबर रखने वाले अगर बंदे हो ना, तो आप खुद सोचें ना, आपके सर्कल में एक बंदा है जो हर एक की खबर रख रख के लिखता रहता है। आप उसके बारे में क्या, आपकी नेचुरल केमिस्ट्री क्या रिएक्शन देती है उसके? दैट्स लाइकली द बॉटम ऑफ द बैरल राइट देयर, राइट? यस दैट्स सर, यस सर, एंड इन बेचारों का इंटेलेक्ट नहीं होता शुरू में, दे एक्चुअली मेक अ करियर चॉइस आउट ऑफ दिस जस्ट यस बिकॉज। सर, बस वही है, डेफिनेशंस कम फ्रॉम द पॉपुलेशन नाउ। सो मीडिया वाले तो इतने करप्ट होते हैं साइकोलॉजिकली, इतने करप्ट होते हैं कि वो बेचारा अगर कोई नेक बंदा भी चला गया ना, तो उसको खुद भी नहीं पता वो साइकोलॉजिकली इतना मतलब इसको डिप्रेशन बोलते हैं। वो डिप्रेशन जो यस सर, डिप्रेशन है, द साइकोलॉजिकल डिप्रेशन मीन्स कि he thinks from the lowest pedestal of intellect. Okay, this is not a small matter. Understand what I'm trying to say, the intensity of my words. When journalists are trying to say something, make sure you understand it's a very deep reactive psychology that they're giving. they बेचारे मफलूज हैं, हैंडीकैप्ड हैं, माजूर हैं ये लोग। So, फिर वो बात ठीक भी करने की कोशिश कर रहे होंगे ना, still you really need to know how to um, attest that piece of information. Now when I hear when can you hear me? Can you hear me? Hello, Arish? Yeah, this is one of those issues that Twitter is going to have. हेलो। Can anyone see if they tell me if they can hear me, please? यस Listen, सर, यस सर, speakers. यस सर, आई कैन हियर Okay. अच्छा, तो पार्लियामेंट हाउस में ना जो मोदी टाइप के लोग हैं ना, जितने भी बैठे यू। हुए यस सर, यस सर, हैं, ये इनको 40 करोड़ मुस्लिम वोट चाहिए, याद रखिएगा। दे आर वेरी सेल्फिश पीपल। ये इलेक्शन टू इलेक्शन मूव करते होते हैं। ओके, यस सर, सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दैट। पाकिस्तान में बैठ के ना किसी हिंदू कम्युनिटी जो कि 1% भी नहीं है हमारी, मैं फिगरेटिवली बोल रहा हूँ, ऑफ कोर्स 1% से ज्यादा है, यस सर, मगर उसको भी आप डायरेक्ट डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल्स, राइट? यस सर, यस सो कर्नाटका पे अगर मूवमेंट शुरू हुई है, तो वो हिंदू वोट लेने के लिए हुई है। दैट्स द बेस्ट केस सिनेरियो। ओके, यस, वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि हुई है और बस खबर आई हुई यस सर, है। अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, इंडिया इज एन एक्सेप्शन बिकॉज इंडिया के अंदर क्लस्टर्स इतने बड़े और थिक हैं कि वो बगैर इलेक्शन के और बगैर किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के भी सिर्फ और सिर्फ एक इमोशनल रिलीजियस हिंदू मोटिव के पीछे भी बंदे मारने की कोशिश कर सकते यस हैं। सर, ओके,
अब हिंदुइज्म और इस्लाम में फर्क किया कि इस्लाम इस एक ग्लोबल स्कोप, जो भी मुसलमान चाहे कर्नाटका के अंदर भी बैठा हुआ है, वो पैदा होता है, वो हमेशा अपने आप को ग्लोबल स्पेस में प्लेस करता है। यस सर। ही नोज मक्का मदीना से आ रही है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, उसको पता है कि बिगर ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आदम अलैहिस्सलाम से स्टोरी स्टार्ट की है, और पूरी दुनिया में इस्लाम पहुंचाना है, हर बंदा अल्लाह के मखलूक है, स्टफ लाइक दैट। यस सर। नीड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन अ हिंदू एंड अ मुस्लिम। हिंदू जो रिलीजियस डॉक्ट्रिन है ना, वो अपने आप को ग्लोबली प्लेस नहीं करती। देयर इज नो मैप। ओके। यस सर। वो इंडिविजुअली प्लेस करती है, इट इंटरनलाइजेज एन इंडिविजुअल थॉट। अब उससे होता ही है कि वो वाला बंदा कुछ भी कर सकता है अपने सिर्फ वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, जो उसके सेल्फ को सेटिस्फाई करते हो। ओके। यस। और वो रिलीजियस वोट लेगा, अपने आप को जस्टिफिकेशन देगा रिलीजियसली। यस सर। ओके। मुसलमान ऐसे कर नहीं सकता, उसकी साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशन ऐसी बन नहीं सकती। हम्म। ओके, ऑल ऑफ अ सडन he will isolate himself from the community. Now I'm not saying कि selfish लोग मुसलमानों में नहीं, और बंदे नहीं मारते और बच्चे मोलेस्ट नहीं करते, और हम saying कि वो हम्म। इस्लाम के नाम पे नहीं कर सकते। ओके। यस। यस सर। इस्लाम के नाम पे कल को बंदा क्यों ना हो, वो ग्लोबल ग्लोबल ऑब्जेक्टिव पूरे करने की कोशिश कर रहा है, वो लोकल यस। ऑब्जेक्टिव में अपने आप को प्लेस नहीं कर रहा। हम्म। सो आई नीड यू टू अंडरस्टैंड, व्हेन आई सी कि इंडिया में ये मसला है, देन आई एक्चुअली गो थ्रू ए गड़बड़ फ्रीक्वेंट। है ना गाड़ी में। आप अपने माइक्रो म्यूट रखें अगर आपने इसके अंदर। हाउ कैन आई म्यूट पीपल? आई नीड टू लर्न हाउ टू म्यूट पीपल। ओके। सो Arish, I need you to give me some data so that we can tell you how to strategize yourself here. Okay? यस सर। Need to understand. India is a very exposed community. ये चाइना की तरह नहीं है। India is very very exposed community. पूरी दुनिया को आराम से दिखाया जा सकता है कि क्या हो रहा यस है। सर। Okay? सर बट एक्चुअली प्रॉब्लम यही है, क्योंकि सर अभी रिसेंटली, जैसे आपको पता नहीं होगा, लेकिन रिसेंटली 2 दिन में हमारे 3 मुस्लिम शहीद कर दिए गए हैं। तो जो शहीद किए गए हैं सर, मीडिया तो एक्चुअली इंडिया में अंडर गवर्नमेंट काम करता है, तो मीडिया इस चीज़ को नहीं दिखाता है। लेकिन जो मुस्लिम, जो एक एक यहाँ पर एक पार्टी बनी है एमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी, जिसका आपने नाम सुना होगा। सर एक्चुअली वो लोग भी इन चीज़ों को कवर नहीं करते हैं, और सर आजकल ये एक आम बात बन गई है कि बस रोज़ कुछ ना कुछ खबर आती है कि यहाँ पर किसी की मॉब लिंचिंग हुई, ये शहीद हो गया, ये शहीद हो गया। एक्चुअली तो सर अब हम इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम वॉइस रेज करते हैं तो हमारे ऊपर सर यूएपीए एंड दिस टाइप की धाराएं लगाकर सर हमको अरेस्ट कर लिया जाता है। सी काम तो लीगली करने की कोशिश कर रहे हैं। अरेस्ट का मतलब है कि देयर सम लॉ दैट दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू एक्चुअली अपहोल्ड हियर। अब टेक्निकली स्पीकिंग हिजाब बैन हो नहीं सकता ना इंडिया में। यू आर लॉयर, यू नो यस दैट। आई सर। एम नॉट इवन इन इंडिया एंड आई नो दैट। सो it's a localized movement. There's no political value to it. However, there's a very religious sentiment that flows through Indian यस सर। Hindus. Now, मसला पता क्या है कि इंडियन मुस्लिम जो है ना, वो रिलीजियस सेंटिमेंट को एडवोकेट नहीं करता। पता नहीं किस बात की आप लोगों को एक बचपन में ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आपने अपने आप को एज अ मुस्लिम ग्लोबल एंटिटी प्रोड्यूस किया तो आप रेबल क्रिएट करार दे जाएंगे। You know what I'm saying? It's a problem with all minorities, by the way. सिर्फ इंडिया के मुस्लिम्स की बात नहीं है, ये अमेरिका के मुस्लिम्स की भी यही बात है। You have no idea कि टोरंटो में जुम्मे का खुतबा जब मैं सुनता था ना, तो ऐसे लगता था जैसे कि बच्चों के जो कॉमिक चैनल्स के ऊपर नहीं खुतबा चलना, वो जो प्रोग्राम चलते होते, बस बस मीठी मीठी छोटी छोटी बातें करते रहो, ताकि ये ना हो कि कोई सुन ले तो हमें अपने स्केप्टिसिज्म में का शिकार करके हम पे कोई इल्जाम लगा दे। आई मीन दे आर सो अफ्रेड ऑफ देयर ओन डीमंस। बाकी के लोग, दुनिया सोच भी नहीं होती है, खुद ही अपने डीमन क्रिएट कर करके उन्हीं से डरे हुए होते हैं। दैट्स ह्यूमन साइकोलॉजी बाय द वे। ओके, that's not an abnormal disposition for a weaker entity in socio-economic terms. So you are a weaker entity. You're going to remain a weaker entity. It's something that you better admit. Okay, do not try and give yourself false identities here. Minority को minority declare करेंगे तो वो अपनी identity तो पूरी तरह practice करेगी ना, उसके बाद वो कुछ कर सकेगी। Now I'm not trying to tell you कि अमेरिका क्या इंडिया में आप रेबल मूवमेंट स्टार्ट करें, but at least give an impression that you know what, it can happen if you cross some lines. But you guys don't really go that way. Okay, you need to create a threat. बच्चा माँ बाप को थ्रेट प्रोड्यूस करके देता है थ्रू हिज बॉडी लैंग्वेज कि समथिंग कैन दैट कैन गो रॉन्ग। ओके, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड
how human psychology works in a communal level. A bड़ी community, 1 billion people, of course, way more. 1 billion people के अंदर, even if you are about 30% of it, I'm assuming you're a little more than 30% of 1 billion. You guys have to understand, जब तक आप मुसलमानों को आपस में कनेक्ट नहीं करेंगे, तो हो कि उनके फायदे की बात है. And create a community just like the black people did in America. Okay, make sure you understand. जो भी स्याह फार्म बंदा अमेरिका में अपने आप को गोरा साबित करने की कोशिश करता है, ब्लैक पीपल एक्चुअली आइसोलेट हिम. ही इज नॉट. उनकी साइकोलॉजी में डाल दिया उन्होंने बच्चों की कि यू कैन नॉट बी अंकल थॉम एंड बी accepted wholeheartedly in our own community. And even though I know they're suffering a lot, but they did the right thing there. Okay, they did the right thing. They actually created a clear, way clearer identity. अब ज़ाहिर है उनके कोई global objectives नहीं है. You need to understand that ना, इस्लाम कितनी mobilizing movement है, ये तो समझ आनी चाहिए ना आपको, ये वाली केस स्टडी देख के. यही अगर काले मुसलमान होते ना वहां पे अफशी, तो सारे तो आप देखते फिर दुनिया पूरी के अंदर क्या उन्होंने वक्त डाल के रखना था सबको. क्योंकि वो अमेरिका में, अमेरिका इज ऑन टॉप ऑफ द फूड चेन ऑफ वेयर मीडिया एक्सपोजर इज, सो यू कैन गेट टू सी. प्लस America has branded itself as, on top of the hierarchy of competence in so many ways. But they actually went into, that Pauline philosophy, जिसकी वजह से they are never going to pick up any sort of threat. Now जितना हबशियों के पास हथियार है, आम गोरा से डरता है उनके पास जाने से. वैसे कोई हबशी गुजर जाए ना उनके गली में से भी, तो पुलिस से कॉल कर देते हैं. वैसे ही चलते फिरते हबशी के खिलाफ, बेचारे के अपने बच्चे होते हैं, उसी नेबरहुड में भी रह रहा होता है. So you imagine if they had that sort of a philosophy that, what, we cannot be contained. I'm sorry, we will never live on our knees. We will die on our feet. You know what I'm saying? ये basic गैरत का तकाजा है ना. So what you need to do is to understand कि Muslim movement इंडिया में कैसे होनी चाहिए. It's not कि आपने rebellion करनी है कि नहीं, but the threat has to be there. यार हम कोई तोता कुत्ता बिल्ला नहीं है जो आपने पालतू जानवर रखे हैं कहीं पे. You need to understand how important these words are, for Muslims. कि जबरदस्ती नहीं चलेगी हमारे ऊपर. हम बागैरत लोग हैं, इस्लाम हमें गैरत देता है. किसी भी मौके के ऊपर ये मत सोचें कि आप जो मर्जी करेंगे और हम मान जाएंगे. Okay, see, Palestinians are not bowing down. Why do you think everybody in the world loves the Palestinians? Because they don't bow down. They keep fighting. कि भाई जो कुछ होगा, every human being has the right to practice whatever he wants to in the limits of morality, right? Now, whatever they want to practice on their own selves, हिजाब तो उस लड़की ने खुद करना है ना. तुम्हारे बाप को क्या जाता है अगर मैं हिजाब करती हूँ. But no, वहां पर you're poking into this matter now, then you poking into Islam now. Okay, so जब तक आप इस्लाम को फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर आइडेंटिटी में डिक्लेयर नहीं करेंगे, people are going to run over you and bulldoze you no matter what you want to do. आप तो खाना पानी भी आपको बंद कर देना चाहिए अगर आप इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहे. And I'm a believer of that psychology. I'm not saying try and kill people. I'm saying the threat has to be there कि भाई इन लोगों से पंगा नहीं लेना. ये बंदे जब कम्युनिटी की आइडेंटिटी के ऊपर आते हैं तो पूरी दुनिया को रोन के रख देते हैं. You need to understand what Muslim is and what Islam gives us. Okay, there's a respect that we give to the South African black community. I know. हम सारी उम्र देते रहेंगे उनको respect. We're going to keep giving that token of respect forever, right? Everybody does. Why do we respect Nelson Mandela? He never bowed down. You know. Now the technique can be argued, because I do argue that South Africa could have been freed about 15 to 20 years before it actually got freed. But okay, that's an argument. But the threat was always there. He was the only man who was actually creating that psychology that, you know what, you can't just step over my face and I'm going to pretend to die. Okay? Now, I'll give you a little psychological test here. When I was speaking, some of the people who are listening and who are going to listen to this might go through a certain psychological dissonance and might just go through the fact that, you know what, Sahil Adeem, you're actually crossing some lines here. You're actually trying to create some certain rebellion.
You're going against some motifs of, global harmony. That's the identity I'm trying to challenge. If you're thinking like that, that's the identity I want to challenge. That is something that is conditioned into you. Okay, that's pure mental slavery. Every human being has the right to rebel against any kind of oppression that is unto him by anybody, regardless of whether a Muslim is being oppressed or a Muslim is the oppressor. We need to help the oppressed, whether it's a Hindu being oppressed by a Muslim. Okay, but in this case, Muslims are being oppressed. And you have to understand that's a way bigger shame that a global community is oppressed at a local level. That's a shame to every Muslim in the world because we're all connected through a single chain. We all should have created that threat. India should have been afraid that, if we touch a Muslim, you know, Turkey and Pakistan and Arab world and the African world is going to start to shake up. Okay, any Pakistani girl, we touch that girl, Indonesian tides are going to start to flow towards India. That's the identity that I wanted to that I'm trying to preach here. But since we don't do that, we actually draw so hard lines, such thick lines between each other that what, even Pakistani Muslims are starting to think that the Indian Muslim ka masla hai. So un tak to Islam pahuncha hi nahi na. They don't even understand what Islam gave them. So it's a problem that we better solve at our own ends. Assalamualaikum, sir. But let me just conclude that last statement. The best part is that आपको जब अपनी बारी आती है ना, जब हम सबको, जब मेरी बहन का हिजाब उतारने के लिए किसी और शहर से लोग या उसी शहर के लोग इकट्ठे हो रहे हो, तब मुझे वही वाली डिमांड चाहिए होती है अंदर से. दैट्स द टाइम व्हेन आई एक्चुअली वांट दैट काइंड ऑफ आइडेंटिटी. मेरे अंदर की आवाजें ऊंची हो जाती हैं, मेरे हाथ पैर खुद ही चलना शुरू हो जाते हैं. यू नो I mean, such an amazing Islam that you practice for your own sister, but somebody else's sister is going through that. All of a sudden, we're like, oh, that's an Indian issue, man. That's such a that's deep level hypocrisy that is brewed into us through last 2-3 generations of weak and confused Muslims. Yes, sir. Assalamualaikum, sir. Alhamdulillah. सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर तो ये होम स्कूलिंग के बारे में है कि अगर तो एक लाइक 25 to 26 years की एक अगर मैरिड वुमन है, लाइक मदर है, तो वो चाहते हैं कि अगर वो भी अपने बच्चों को ग्लोबल चेंज के लिए प्रिपेयर करे, लेकिन उसका लाइक इस्लाम से इतना एक्सपोजर नहीं है और वो जस्ट वो पाकिस्तानी इस्लाम में कैसे तो फॉलो कर रही है कि नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, बस ये काम थोड़े बहुत. तो उसने अगर अपने बच्चों को इस चेंज के लिए तैयार करना है, तो उसको अपने लिए, अपनी इस्लाह के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने कौन कौन से ट्रेड्स उसके अंदर लाजमी होने चाहिए, पैदा करने चाहिए, और उसको कौन कौन से स्टेप इस वक्त उठाने चाहिए कि अपने आप को वो प्रिपेयर करे, ताकि फिर उसके बाद वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन जो कि अपने बच्चे हैं उनको इस पर्पस के लिए क्या होता है ये प्रिपेयर कर सके. तो उसने अपने कौन से ट्रेड्स चाहिए और अपनी इस्लाह के लिए क्या क्या उसको स्टेप उठाने चाहिए. पहली बात तो उसने पहला स्टेप ले लिया हुआ है, अल्लाह की तरफ से ले लिया हुआ पहला स्टेप. क्योंकि जो बच्चे स्कूल में जाते हैं ना, दे आर बीइंग प्रिपेयर्ड नॉट to create any global change. You have to understand that. Okay, they're put into a certain harmony. School का ना मतलब समझ लें आप पहले, और philosophy and basic psychology समझ लें. School में जाते ही you come into a certain routine that the group is following. We call that the paradigm, right? आप उस paradigm से हट नहीं सकते because you'll feel isolated. Isolation के खिलाफ psychologically innate psychology designed है. You only do what the group is doing and you feel better about this. आपका serotonin high हो जाता है जब वो वाला काम करना शुरू करते हैं आप जो ग्रुप कर रहा है पहले से. जब आपका serotonin high होता है, you feel get better, you feel normal, you feel a little more secure. Actually, you feel a lot secure. So स्कूल में जब भी कोई बंदा स्कूल के उस सिस्टम के खिलाफ कोई भी कभी भी गया, उसको स्कूल से निकाल दिया गया है. जब उसने क्वेश्चन टीचर से वो वाले करना शुरू किया, टीचर ने उसको मार के बिठा दिया कि यार तू कल क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, यार मेरी रूटीन तोड़ रहा है वो मेरा. You're going against um, you know the norm. We call it the norm, right? What's the norm? Norm is the unwritten consent of the group, right? Norm is the unwritten consent of the group. They've actually put that consensus
that this is how things are supposed to be. They don't write it down, but it is what it is. Now school mein to khair likha bhi hota kai dafa, so what I'm trying to always challenge is that those rules, that even if they are written or unwritten, where did the rules come from? Who came up with this, and how did it actually rhyme with your um, you know you know a psychology that was never in your mind to begin with. It's against the psychological disposition of the human mind, and but they still train you into it, of course, and you can be trained into anything, right? So a prisoner of war disorder कहते हैं इसको. Prisoner of war असल में अपने दुश्मन के अंडर ही रह रहा होता है, और मगर जब वो उसको उसकी फौज जंग जीत जाती है, उनको जब रिलीज किया जाता है, तो they actually tend not to go out of that camp, even though they're tortured there, but their natural disposition is not to go out. Okay, so बिल्कुल यही वाला वाकया स्कूल के बच्चों के साथ होता है. स्कूल के बच्चे जब देखते हैं ना कि एक आइसोलेटेड इंस्टेंस के अंदर एक बंदे ने क्या कर करके दिखा दिया, they start getting afraid. Okay, because their group doesn't do that, and they're actually following the norm. It's called harmonies. It's a psychology में इसको harmony principle कहते हैं. Harmony principle is कि मैं अपने आप को odd man out नहीं करना चाहता. Okay, so स्कूल में तो आपने डाल दिया उसको. अब स्कूल में जो कुछ स्कूल की एक नाअहल टीचर ने या उसके 2 नंबर प्रिंसिपल ने अपना बिजनेस खोलने के लिए घर के अंदर एक स्कूल खोल लिया था, आपका बच्चा भी उस 2 नंबर आदमी के छोटे से इंटेलेक्ट के ताबे हो गया ना. वो उस बच्चे के अंदर ये बात आ ही नहीं सकती जब तक कि कोई टीचर या कोई दोस्त या कोई कजन या कोई बाहर का बंदा आना डाले कि क्वेश्चन तो कर, क्या पता ये बंदा टोटल, ये पूरा सिस्टम ही गलत हो. Nobody thinks like this. Nobody can think like this. Okay, somebody has to give you an external feedback. अब जिस बंदे ने भी होम स्कूल किया है ना, उसने पहला स्टेप ले लिया ग्लोबल चेंज का, क्योंकि ग्लोबल चेंज सिस्टम को के अंदर रह के उसको सही मान के तो नहीं हो सकती. सिस्टम को गलत मानना जरूरी है उसके लिए, और गलत मानने के लिए आपको हार्मनी प्रिंसिपल तोड़ना पड़ता है. आपने 3-4 ऐसी फोर्सेस डाल दी होती हैं बच्चे के जहन के ऊपर, इतना प्रेशर डाल दिया होता है स्कूल के बच्चे के अंदर कि वो कभी जिंदगी में नहीं वो काम करेगा. इसलिए 99.9% ऑफ द टाइम जिन लोगों ने भी बड़े काम किए और पहले उन्होंने अपने ही उस क्लस्टर के खिलाफ पहला स्टेप लिया है. You name it. Every prophet does that, but people generally don't really understand prophets as books of psychology. They only look at prophets as book of history. So what I'm giving you is a classic lesson on psychology, that अपने cluster के खिलाफ जानना क्यों जरूरी है सबसे पहले. If you cannot conquer your own cluster, then you cannot conquer the world. Now she has naturally conquered her, well, for taking the first step to conquer the cluster. उसके ऊपर वही वाला प्रेशर है रोज. वो बेचारी मजबूरन पैसे ना होने की वजह से होम स्कूल करवा रही है, या फिर शौकिया करवा रही है कि नहीं मैंने इस 2 नंबर सिस्टम का हिस्सा नहीं बनने देना. ओके, 2 नंबर में क्यों? साइकोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स के ऊपर इसको 2 नंबर कह रहा हूँ. यू नेम एनी स्कूल, हार्वर्ड से लेके आप किसी लोकल आंटी पब्लिक स्कूल ले लें जो कि किसी आंटी ने खोला हो किसी गांव में. तो हार्वर्ड से लेके आंटी पब्लिक स्कूल जितने भी हैं, वो सब के सब एक ही तरीके से क्यों हार्मोनाइज हुए हैं? बिकॉज somebody is actually trying to be part of the group, and he wants to show the group that he's part of the group, and that's the harmony principle. Okay, so all of a sudden मैं आपको कहूँ मैं हार्वर्ड ग्रेजुएट हूँ, अगर मैं आपको बताऊं मैं हार्वर्ड से 5 साल पढ़ाई की है, all of a sudden आपके जहन में क्या इंप्रेशन बनता है मेरा? Good, right? Where did that come from? That came from the whole tide and whole snowball effect that actually goes through your mind, that what, oh my god, he's top of the hierarchy of the food chain. Okay, where is that hierarchy coming from? Who wrote that hierarchy? And who wrote that, whatever you're going to do, or what is the rule of the game, and who's going to be on the top, and who decides the top, who decides the bottom? You never read any book on this, but you all know about this. We all know about this. So there you go. That's your harmony principle right there. Nobody can break it just like that. It takes a lot of strength and a lot of courage and a lot of knowledge of facts and real science. You know what I'm saying? And imagine the irony that Harvard is going to represent science now. Then you can never come out of it. It's like a vicious circle. You will never come out of it if this system starts to represent the actual psychology of things. That's why I'm against. When I say that APA की registry पूरी दुनिया में सबसे बड़ा हादसा हुआ है. अगर APA is going to call the shots, तो फिर दुनिया में कोई भी रूल आप नहीं फॉलो हो सकता. बिकॉज आपने दोनों दरवाजे बंद कर दिए हैं उस सिस्टम से बाहर निकलने के. And that's a big problem that we're not looking into. And I need you to all to understand how to set the prism right. अपने बच्चों को स्कूल से निकालना would be a favor to them.
You know what I'm saying? You want to educate them? Yes, educate them for God's sakes. But educate them you know, in a system where the education is actually going to matter globally and going to create a change. आपको एक नेचुरल सी मिसाल दे देता हूँ. दुनिया में कोई भी ऐसी इन्वेंशन हो जो कि सबके भले के लिए जाती हो, पूरी दुनिया के इंसान नेचुरल से पिकअप कर लेते हैं. Innate psychology always trumps the derived and adaptive psychology. So I'm actually talking to that innate psychology of everybody here. And everyone knows what I'm talking about. It's not like, oh, आप लोगों को feel नहीं हो. Of course feel हुआ है. You know what I'm saying? We were all crying in school. What the hell is going on? Why are you doing whatever you're doing? But we were still doing it because everybody was doing it. You know what I'm saying? It's a matter of respecting your own self. It's a matter of understanding your own system. And that's why I'm thinking education, the current education system, is not the actual reason, but is the finest catalyst towards the destruction of morality and all actual human development. Okay, as an individual and as community. अगर ये सिस्टम ना होता तो हम काफी आगे जा चुके होते. ऐसे ऐसे साइंटिस्ट प्रोड्यूस किए होने थे हमने, ऐसे ऐसे फिलोसफर्स प्रोड्यूस किए होने थे हमने. अब खाली हमने भेड़ बकरियां प्रोड्यूस की, मजदूर प्रोड्यूस किए, नथिंग एल्स. डोमेस्टिक फैब्रिक तबाह करके रख दिया हमने. मियाँ बीवी की क्वालिटी रिलेशनशिप तबाह करके रख दी हमने. हमने फादर सन की रिलेशनशिप तबाह करके रख दी. You know, this is such an amazing catalyst to the worst thing that ever happened to us. Sir, can I add to that? Sure, please. सो मैं बहुत से लोगों को सुनता हूँ इस्लामिक सर्कल्स के अंदर कि वो एडवोकेट कर रहे होते हैं होम स्कूलिंग को, कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, या ऑफ कोर्स हमें अपने बच्चों को इस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के हवाले नहीं करना चाहिए. बट द पॉइंट वी आर मिसिंग इज के डू वी हैव इनफ रिसोर्सेज टू बिल्ड आवर ओन नेटवर्किंग सिस्टम? क्योंकि द रीजन पीपल गो टू हार्वर्ड और येल और like you yourself have gone to Toronto, it's because of that network and that kind of job securement that these institutions offer. So I think a part of our failure is also that we have failed to build the strong community networks that takes care of not only a child but takes care of a family. क्योंकि हमारे पास तो उस मॉडर्न सिस्टम से हटकर कोई अल्टरनेटिव हमने प्रेजेंट ही नहीं किया. Yes, we can criticize on the Western education system, but do we have right now an alternative to that? That's where I think we're lacking right now. See, that's a good, very good point that you raised. But there would see education system को mainstream मत बोलें. Understand your psychological disposition here. You're actually speaking on or not on behalf of, but through the education system right now. See, imagine the labor force right now. Let's do the math on this one. ज़्यादातर labor force तो education system की failure है. You have to understand. So if you're saying कि वो economic indicators पे measure करूँ तो economic indicators पे तो पूरी तरह fail हुआ education system. What most of the world cannot even afford the Ivy League. Okay, so let's just factor that out as well. उनको भी छोड़ दें आप. Okay, they don't really call the shots. Let's talk about the big business here. Big business में जितने भी बंदे हैं school dropouts हैं. So don't let's not put wrong. Well, you're putting the right indicators, but you're actually giving that a very different spin. असल में ऐसे नहीं हो रहा. Okay, the facts of the matter is, the real facts is कि education system के जितने भी failures हैं वो असल में economically they're way better. जो education system के topper थे वो सारा किसी ना किसी के नौकरी लगे हैं जाके. Okay, fixed income scheme के अंदर ना उनकी affluence बहुत कम है compared to the affluence of the business community in the world. Obviously, in any and every demographic, सारे के सारे businessmen obviously make 110 folds उनके income streams हैं. तो वो एजुकेशन सिस्टम के रिप्रेजेंटेटिव है? ऑब्वियसली नॉट. आप सब कॉन्टिनेंट की ना बात करें, दुनिया की करें, आप साउथ अमेरिका की बात करें, बिगर कम्युनिटीज. सब कॉन्टिनेंट में तो कंपैरिजन ही नहीं ना. ओके ओके, वी कैन कॉल इट एन आउटलायर कि हम यहाँ पे अनपढ़ बंदा खरब और अरबपति है और पढ़ा लिखा बंदा सिर्फ लाख रुपए की तनख्वाह के ऊपर सारी जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा है. ओके, ये तो सब कॉन्टिनेंट की तो स्लेवरी किसी और 3-4 अलग अलग अपने तौक बांधे हुए अपने गले में ना. और खाली एजुकेशन सिस्टम की वजह से नहीं हो रहा पाकिस्तान, इंडिया में, इधर और भी बड़े सिस्टम हैं जिनकी वजह से हम पक्के गुलाम हैं. इसलिए आज तक कभी भी हमने बड़े लेवल पे रिबेलियन नहीं की. बहरहाल
The question is, you look at Australia, you look at North America, you look at South America. That's a very good case study, by the way, South America. And you look at Central Europe. You look at Africa. चलें अफ्रीका में तो एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से फैक्टर इन कर भी नहीं सकते हम. However, in a global landscape, आप स्टेटस निकाल के देख लें, you will find out एजुकेशन सिस्टम के चीते जितने भी हैं, उनकी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कंपेयर ही नहीं हो सकते. मतलब 1% नहीं रिप्रेजेंट करते. You do the math. I know the math. I mean, you have you have it in front of you. Okay. अब मैं इसलिए तो कहता इस्लाम लिबरेट कर देता है कि ये वाला सिस्टम ही अपने हाथ में रखता है. ओके, नहीं पैसों वाला सिस्टम तो हमारे पास होना ही नहीं. ओके. ओके, लेट्स जस्ट डू द मैं जरा जिनको समझ नहीं आ रही मैं उनको मिसाल दे देता हूं. एजुकेशन सिस्टम की हायरार्किकल कॉम्पिटेंस की पीक क्या है? प्रोफेसरशिप. आप देख लें प्रोफेसर की तनख्वाह कितनी है. ओके, उसी स्कूल के उसी प्रोफेसर के स्टूडेंट जो कि मैट्रिक में फेल हो गए थे, वो उसी प्रोफेसर को हायर करते हैं बाद में. And I'm not giving you an exception here. I'm giving you examples which are so abundant that nobody can just close his eyes on. Okay, Professor, मगर उनको छोड़ दें जो बिलियनियर ट्रिलियनियर हुए, छोड़ दें उनको. Okay, I don't want to talk about Bill Gates dropping out of college. Okay, I'm talking about just the professors here. Education system की जो peak है, you anyone who's going to listen to this would understand that nobody wants to be a professor now. Why? Because of economic indicators only. But that's the top of the food chain of this education system. And nobody wants to be on the top of the food chain. ऐसी हायरार्की को कभी भी लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस नहीं मिल सकती जिस हायरार्की को अपने ही हायरार्किकल नोड्स के अंदर रिस्पेक्ट ना हो. If you don't want to be on the top of the food chain, you're not part of the food chain anymore. You're naturally going to rebel yourself out of it, or transit out, or phase out, or taper yourself out, consciously and subconsciously. So you need to understand that the system that you're representing does not really live up to the expectation that you yourself have from the system, or from any system. Okay, so many kind of homeschooling. You also, the first point of your that you had was homeschooling. मैं homeschooling के हक में नहीं हूँ. I'm not. I'm just saying कि पहला स्टेप उस खातून ने ले लिया. And whoever homeschools should know कि वो बेचारा तो खुद ही इतना नाहल था, उससे बेहतर था वो नाहल स्कूल टीचर था. होम स्कूलिंग इज, जिस लेवल पे होम स्कूलिंग को समझा गया ना कि माँ बाप बैठ के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें, that's bizarre. That's not scientifically possible. That's not psychologically possible. ना इस्लाम ने ऐसी कोई तरगीब दी. ओके, आप फैकल्टी एक्सपर्ट से ढूंढेंगे और उनको ढूंढने के बाद, इफ यू कैन अफोर्ड देम, यू हैव टू हायर देम. इफ यू कैन नॉट अफोर्ड देम, ट्राई एंड गेट समथिंग इन द मिडल कि किस तरीके से वो नॉलेज बच्चों तक आ रही हो. उस करिकुलम को के मैं अगेंस्ट हूँ जो 20-20 साल के लिए उन्होंने फिक्स किया हुआ है. उस क्वालिटी ऑफ करिकुलम, उस क्वालिटी ऑफ कंटेंट के खिलाफ हूँ कि जो कि इस करिकुलम के अंदर उन्होंने इंस्टॉल की हुई. ओके, एंड ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकली सप्रेस्ड सिस्टम तो ये है ही, वो तो ताबे और गुलामी ही प्रोड्यूस करता है. ओके, वो तो एक बड़ा मसला है इसके साथ. सेकेंडली जो आपने बात की है, हाँ ये हम पैसों के लिए एजुकेशन लेते हैं. नो वी डोंट, बिकॉज एजुकेशन के बाद हमें बहुत मिनिमल किस्म की एक फिक्स्ड सिक्योरिटी ऑफ सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ रही थी, वो भी मिलती नहीं है. I mean, you want to do the math on the number of resumes piled up on every company that are never going to be called. They're all educated people. You know what I'm saying? So it's a matter of understanding कि आपका वर्ल्ड व्यू किस तरीके से क्रिएट हुआ है. उसके बाद आप बच्चे पैदा, उसके बाद शादी करें, उसके बाद बच्चे पैदा करें. ओके, टेस्ट योरसेल्फ इनटू द गेम बिफोर यू एक्चुअली ट्राई टू पेट पीपल इन द गेम. सो I'm not saying कि चलें जी एजुकेशन सिस्टम को के सारे के सारे होम स्कूल शुरू कर दें. ट्रस्ट मी, आई डोंट वांट दोज इनकॉम्पिटेंट women and men to try and teach their own kids. उन्होंने तो वो भी बुरा हाल कर देना है. उन्होंने फिर पैसे भी कमाने होते हैं, माशी तकाजे भी होते हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं कुछ कर सकेंगे, उनके बच्चे तो बिल्कुल जीरो हो जाएंगे. मगर स्पेशलिस्ट को अगर आप हायर कर सकते हैं to give certain allocated times based on the stages of the brain, तो उस स्टेज के थ्रू आप बच्चों को फैकल्टी दें और उस फैकल्टी के थ्रू बच्चों को एडवांस स्टडीज दें. आपने अगर लेट्स जस्ट अस्यूम कि अगर आपने क्रेडिट करवाना ही है अपने बच्चों को, तो ठीक है, आप ओ लेवल ए लेवल के पर्चे दिलवा दिया करें. मेक देम गो थ्रू द सिस्टम. मुझे ही पता डॉक्टर के लिए मेडिकल स्कूल जाना जरूरी है. मेरा बच्चा मेरे को, मैंने घर में डॉक्टर बनाया, नो वन इज गोना कम टू हिम get one treated, right? You know what I'm saying? However, पहले दुनिया में ऐसे ही हो रहा था, मगर अब नहीं हो सकता ऐसे. I get that. I get the facts in front of me. I'm not gonna, just close my eyes on it. So I'm going to say, okay, use the system for now, just to accredit yourself. You're going to be way more advanced in the system, and then change the system later on.
As soon as people are going to see कि proof of concept आ गया, स्कूल में नहीं जा सकते बच्चे और स्कूल के बगैर भी सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, तो स्कूल का बिजनेस खुद ही बंद हो जाना है। कॉमन सेंस की बात है। वी आर टेकिंग द द फाउंडेशन स्टोन आउट। जब स्कूल में बच्चे नहीं जाया करेंगे तो स्कूल पैसे कैसे बनाएगा? तो सिर्फ एक्रेडिटेशन बॉडीज रह जाएंगी, ऑटोमेटिकली ये सिस्टम डिसमेंटल हो जाएगा। एक जनरेशन की बात है। सो मैंने वाले खुदा और वो वाले बुत तोड़ने हैं जो लोगों ने खुद बना के रखे हैं अपने अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए अपने घर में। वो हार्वर्ड की टीचर्स जलानी है, वो आईवी लीग्स की वाली रिस्पेक्ट की, भैया बात सुने, सब कुछ ठीक है, अगर खाली एक्रेडिटेशन बॉडी रह जाए, लेट्स टेस्ट आवर किड्स ऑन दैट। देखते हैं किसने कितना तीर मारना है अपने बच्चों को खुद पढ़ा के, ठीक है? दैट्स द बेस्ट सिस्टम। खुद ही नेचुरल साइकिल क्या आएगा। एक्रेडिटेशन बॉडी के खिलाफ नहीं हूं मैं, ओके, आप एक स्टैंडर्ड बता दे, इसके ऊपर मेरी साइंसेस को टेस्ट कर लें, ह्यूमैनिटीज को टेस्ट कर लें, मैथमेटिक्स को टेस्ट कर लें, फिलोसफी को टेस्ट कर लें, ओके, आप जितने मर्जी पर्चे लें मेरे बच्चों के, मैं तो इसके खिलाफ नहीं हूँ। मगर ये पूरा हार्मोनाइजिंग सिस्टम बना के आप लोगों ने समझ लिया, एंड प्लस यू पुट अ बिजनेस स्पिन ऑन इट। आर यू किडिंग मी? दिस इज अ बिजनेस नाउ, एंड यू थिंक आई एम गोना try and accept this and bend over and say, oh, you know what, whatever you want, sir. And this is not how it's going to work. At least not for people like me and people who are conscious कि अपने बच्चों को तो मैं इस काम में लगाऊंगा मैं। बाय द वे इकोनॉमिकली भी ज्यादा वायबल यही है कि आप पूरी 50,000 रुपए महीने की स्कूलिंग सिस्टम जो आप करवा रहे हैं उससे बहुत सस्ता पड़ता है, स्पेशली स्पेशलिस्ट ऑफ द फैकल्टीज को आप हायर करें, एंड दे ट्रेन योर किड्स इन फॉर ईयर एंड ईयर। ऑफ कोर्स ईयर एंड ईयर तो नहीं होता वो, मेरा मुझे पता है कि किस तरीके से कितने साल मैथमेटिक्स पढ़ानी है, कितने साल आपने नेचुरल साइंसेस पढ़ानी है, कितने साल सोशल साइंसेस पढ़ानी है, और दीन कितने साल पढ़ाना है। आई मीन वी ऑल नो दैट। दीन तो खैर सारी उम्र पढ़ाना है। तो द क्वेश्चन इज, फाइनेंशियली भी सस्ता है ये काम, तो गरीब का बंदा एजुकेशन सिस्टम में क्यों अपने आप को रगड़वा रहा है? उसके बाद भी उसने गरीबी मरना है। फिर अगर आपने पैसे ही चाहिए आपको, तो फिर तो आपने बहुत ही गलत चॉइस ली थी। सो आई मीन फ्रॉम एनी एंगल, आई डू नॉट नो व्हाई दिस मूवमेंट डिड नॉट स्टार्ट बिफोर। maybe they were just too busy or maybe too overwhelmed because सिर्फ 100 साल हुए थे इसको भी। मैं I don't know, but someone's gonna stop, someone's gonna have to put the foot down and say नहीं, मेरे बच्चों के लिए नहीं काम। okay, and enough people and enough media exposure, social media के ऊपर proof of concept आ जाए, जिस मर्जी तरीके से आ जाए यार, सोशल मीडिया पे ना आए, बेशक हमसाए के थ्रू पता चल जाए आपको, then you start to create a proof of concept कि हाँ यार मैं भी कर सकता हूँ। A single mother in Pakistan at a very low SEC class is going to do that, then why the hell, what kind of an excuse do I have not to do this? I mean, we cannot call ourselves sincere to our kids and still put them in this system. I mean, that's just bad math. Well, I hope this is recorded. I got Pakistan mein Juma prayer is about to begin in about 45 minutes, so I gotta take a leave. And this is recorded. I hope so. I just turned that option on. So this is my first Twitter Space podcast. So I hope everyone can hear me. सबको आवाज आ रही थी, सबको समझ आ रही थी. Apologize for speaking a little swiftly today. मैं काफी चीजें एक वक्त में कर रहा था इस वक्त. Okay. So any last thing that anyone has to say before we just call it off? Otherwise, we'll just take a leave. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल है, वो ये है कि मैं 21 साल का एक नौजवान हूँ, लॉ पढ़ रहा हूँ, और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं सिस्टम के लिए क्या करूँ, इस्लामी निज़ाम के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए मेरा कि जो इस्लाम को तक़वियत दे। बस इसका जवाब दे दें कहीं जी। आप 21 साल के हैं, तो अब तक तो आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर ओन प्रॉफिट सल्लम होना चाहिए था ना। तो सबसे पहला कदम तो ये करें ना आप। ओके, एज एन इंडिविजुअल वी नीड टू बी द मोस्ट अट्रैक्टिव ह्यूमन बीइंग ऑन द प्लेनेट। ये कंपटीशन होना चाहिए मुसलमानों का कि दुनिया में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव आदमी कौन है, लोग अब खींचे चले आते हैं उसकी तरफ। ओके, एज एन इंडिविजुअल आपकी प्रोफाइल जो है उसके अंदर कैरेक्टर एलिमेंट्स इतने स्ट्रांग हों, उसके अंदर जो अखलाकी और इंटेलेक्चुअल अकदार हैं वो वाजे और नुमाया हों। ओके, दिस इज द बेयर मिनिमम आई एम टेलिंग यू कि आप अपने अंदर रखें। पीक तो ऑब्वियसली हमारा नबी अलैहि सलाम। ट्राई एंड रेप्लिकेट द 3 लेयर्स। इंटेलेक्चुअल लेयर अलग से हो, ओके, इंटेलेक्चुअल लेयर, आपकी नॉलेज लेयर अलग से हो, और आपके अखलाक के लेयर, 3 ही तो लेयर्स हैं आपकी साइकोलॉजी में।
चौथी तो कोई लेयर ही नहीं है। हमने तीनों के ऊपर लोगों को दे दिया, आउटसोर्स कर दिया, अपना इंटेलेक्ट आउटसोर्स करके बैठे हुए हम एज इंडिविजुअल्स, कि मेरे अंकल ने बताया था, मेरे अब्बू ने बताया था, मेरे फलां दोस्त के अब्बू ने ये कहा था कि ये ऐसे करते होते हैं। आर यू किडिंग मी? दिस इज यू नॉट इवन देयर लोकल पेट if you're not thinking on your own. Okay, so understand कि आप as an individual at 21 should have been someone that the world or at least your own cluster is talking about. कि आपका नाम उसामा है, कि उसामा is someone who I want to raise my kids to become when they're going to be 21. I need to replicate this model of whatever he's doing. और इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं ना, इंडिविजुअल कर सकता है। आप अगर इंटेलेक्चुअली देखें तो अल्लाह ताला ने वो सारे के सारे इंतजाम अभी भी मुफ्त रखे हैं, और मेरा ख्याल है अल्लाह आलम या ताला को अजाब दे दें और इसके लिए भी पैसे लगा दें। ये एट्रीब्यूट्स मुफ्त में तैयार होते हैं, जो नबी इस्लाम के एट्रीब्यूट्स हैं, कोई पैसे नहीं लगते इसके लिए। सो वी डोंट हैव एन एक्सक्यूज कि नहीं जी मैं फलां जगह पैदा हुआ था तो हो नहीं सकता था। आप जहलिया के मक्का से भी गंदी जगह पैदा हुए थे, हो नहीं सकता ना। सो प्रॉफेट वसल्लम को अल्लाह ताला ने प्लेस भी उस टाइम और उस जगह पे किया है कि लोगों के पास एक्सक्यूज ना रहे कि यू नो व्हाट, आई कैंट डू इट बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस रीजन। योर इंटेलेक्ट has to be the top of the hierarchy. No compromise, zero tolerance. Your akhlaq has to be the most attractive, make you the most attractive human beings around you. कि लोग बस वेट करेंगे आप घर से कब बाहर निकलेंगे. They want to just see the way you talk and the way you walk. Okay? The way you react to the little situation. ये सब अखलाकी इकदार है. कोई पैसे लगते हैं इसके? बिल्कुल भी नहीं. क्या लगता है फिर उसामा? थिंक अबाउट इट. क्या लगता है? खर्चा कहाँ होता है? हिम्मत लगती है. वो वाले काम करने पड़ते हैं जिनके लिए तो तकलीफ काटनी पड़ती है, और ज्यादा भी नहीं काटनी पड़ती ना एज एन इंडिविजुअल। जब तक आपके अंदर डिपेंडेंट्स नहीं आते, कम्युनिटी आपको फॉलो नहीं करती, तब तक तो आपको जान की भी बाजी नहीं लगानी पड़ती। तो फिर हम क्यों रुके हुए थे? सो इट्स अ इट्स अ इट्स अ इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। एज एन इंडिविजुअल आप सिस्टम के लिए अगर रिप्रेजेंटेटिव, आप खुद सोचें, खबीस किस्म के 5,000 50 लाख 5 करोड़ लोग खबीस किस्म के इकट्ठे हो जाएं और वो सिस्टम की बातें कर रहे हों, सख्त खबीस किस्म के। आपको पता है ना मैं किन की बात कर रहा हूँ? मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। हमसे ज्यादा खबीस है कोई इस वक्त दुनिया में? सेकंड के लिए कोई बंदा नहीं ट्रस्ट कर सकता मेरे ऊपर। मैं बताऊंगा सिस्टम चलाना क्या है। सो मेरा काम क्या है? पैसा पहले अपने आप अपनी सफाई करके अपने कम्युनल कम्युनल ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ने मैंने। ओके, मैं ये गांधी साहब की सत्याग्रह मूवमेंट नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ। कम्युनल ऑब्जेक्टिव पूरे ही रखने हैं, मगर एज एन इंडिविजुअल अपनी क्लेंजिंग तो हर वक्त साथ साथ रखनी है। ऑब्जेक्टिव मेरा कम्युनल सिस्टम ही है, मगर अपनी क्लेंजिंग नहीं करूंगा। और अगर 100 बंदे भी अट्रैक्टिव इकट्ठे हो गए ना तो पूरी दुनिया उनको फॉलो करेगी। ओके, 50 लाख खबीस इकट्ठे हो जाए, कोई नहीं फॉलो करना चाहता उनको। वो सिस्टम की बातें करें तो लोग सिस्टम को भी गालियां देना शुरू करते हैं। ये तो शुक्र है कि अभी तक वो वाला इस्लाम नाफिज नहीं हुआ जो हम लोगों ने अपने 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 जेहन में बनाया हुआ। सो अंडरस्टैंड, it's a bigger problem that you are, Usama, going to solve. I don't know where you are from. Maybe you're from India or Bangladesh or Pakistan or wherever. You needed to be a very well known person because of your values that you practice, that the values that you practice. हम क्या करें? We are, Usama, you and I both are playing the game कि we want to be famous. I swear to God. But for what? कि पैसे कितने मेरे पास, गाड़ी कौन सी मेरे पास। हमने उसको अट्रैक्टिव इंडिकेटर्स के अंदर इसलिए रखा है बिकॉज मेरी अम्मी अबू ने कहा था कि क्योंकि वो इससे अट्रैक्टेड थे। यू चेंज द डेफिनेशन ऑफ अट्रैक्शन। You want to be famous? That's your psychological disposition to be famous, buddy. You're from heaven. There's no way you're going to fight win that fight. Okay, everybody likes to be famous, of course. It's innate. But famous for what? That's the question. Change the definitions first and foremost. भाई 21 का मतलब है कि आपसे वही सवाल होने हैं जो 91 ईयर ओल्ड के बंदे से सवाल होने हैं। डिमांड भी वही है आपकी। उस बेचारे के पास तो एनर्जी भी नहीं होती, आपके पास तो एनर्जी की भी पीक है इस वक्त। So make sure you understand. Everyone looks at a 21-year-old boy and a girl with envy. Okay, that's the kind of asset that you have. Everyone, पूछ लें किसी भी ग्रुप पे, या अभी इस वक्त जो ग्रुप पे बैठे हैं उनसे पूछ लें कि 21 साल वाली लाइफ चाहिए, मतलब you want to change, go back to when you were 21? Of course. You want to, go back when you were 21. Peak of everything. Youth. So you need to understand you have the asset. न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर बेटा आप बैठे हुए हैं, बाकी सब लोग न्यूक्लियर रिएक्टर को एक्सपायर कर चुके हैं अपने अपने। So if you don't want to use that energy, nuclear energy, then बाद अपनी ट्विटर स्पेस बना लीजिएगा आप भी। ओके और
इसके अलावा कुछ नहीं कर सकेंगे. Okay? Sama, I hope I've answered the bigger part of your question. I gotta run because of the Friday prayer. I'll see you inshallah. Inshallah, we're gonna be doing this just about twice a week, inshallah. Even more, भाईन inshallah. बहुत शुक्रिया, आपने माइक दिया हो सब, लेकिन चले आपके पास वक्त नहीं है तो इसलिए मैं सवाल नहीं करता. नेक्स्ट टाइम आपसे जब मेरी मुलाकात होगी तो इंशाल्लाह ताला हम आपसे बातचीत करेंगे, ठीक है? जी सर, जरूर, क्यों नहीं. बातचीत के लिए हमने ये कमरा खोला. इंशाल्लाह मैं होपफुली twice a week, नहीं तो ज्यादा thrice a week की कोशिश करूंगा. Twitter is like something that I don't use, so but that's my only social media handle जो कि मैं खुद मेरे पास है. मेरी बाकी की सब एजेंसीज यूज करती हैं, चाहे वो फेसबुक हो या यूट्यूब हो या इंस्टा हो. ये ट्विटर तो मेरे हाथ में ही होता है. सो वी आर गोइंग टू बी इन कांटेक्ट इंशाल्लाह, a lot more इंशाल्लाह. जी भाई, बहुत मजा आया. अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और आपको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए. आमीन. आमीन. आपको भी. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह. जज़ाकल्लाह खैर सर, जज़ाकल्लाह खैर। बारक अल्लाह और फीक मैं सर. पाकिस्तान में ही हूँ और एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, ज़िला कसूर से। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने कभी मौका दिया तो आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। या कसूर का नाम तो जरा जैनब के नाम पर लिखवाने की कोशिश करें ना. सबसे पहले तो ये करें आप. सर इंशाल्लाह मैं ला पढ़ रहा हूँ और 2 साल रह गए हैं मेरे कंप्लीट होने के, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला वही इंशाल्लाह. कुछ। ओके. ओके. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह. अस्सलाम वालेकुम सर।